Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Sir, good afternoon, sir. Good afternoon. A screen is shareable to all of you. Yes, sir. Okay. Today we will discuss about the concept of a system. In previous class yesterday we have learned about the what is a system. Then today we will start from the definition of system. Please write down, all of you please write down concept of a system. Write down concept of a system. कौन ऑफ ए सिस्टम सर? Concept of a system. Write down. A system is a group of interrelated components. A system is a group of interrelated components working together. A system is a group of interrelated components working together toward a common goal, by accepting inputs and producing outputs, प्रोड्यूसिंग की प्रोविजिंग आउटपुट सर. प्रोड्यूस इनपुट जब हम डालेंगे तब प्रोड्यूस करेगा, ना कि प्रोविजन. प्रोड्यूस आउटपुट जनरेट करेगा. प्रोड्यूसिंग आउटपुट्स in an organized transformation process. In an organized transformation process. और देखिए जो सिस्टम कॉन्सेप्ट होता है, सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, प्लीज लिसन, सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट. ओके, लिखिए द कंसेप्ट ऑफ ए सिस्टम आर सर फिर से रिपीट कीजिए. ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस का क्या बोले सर? full stop. The concept of a system are The concept of a system are technology, comma, the concept of a system are technology, comma, application, comma, development and management.
अब फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए फर्स्ट पॉइंट टेक्नोलॉजी, फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन टेक्नोलॉजी। सर कल भी सब सारे सब्जेक्ट का सब क्लास का जो है ऑनलाइन क्लास होगा सर? Whatever will happen, everything comes through the message, okay? जो भी होगा मैसेज आपको डाला जाएगा। देखिए फर्स्ट ए टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्क्स आर systems of information processing components. Computer networks are systems of information processing components computer networks are systems of information processing components that are a variety of hardware, Roll number 12, what is a problem? That are a variety of hardware, comma, software and telecommunication technology देखिए टेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ लाइक वी आर यूजिंग आवर कंप्यूटर सिस्टम, तो टेक्नोलॉजी का मतलब इट इज ए कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, इट इज ए कम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, इट इज कम्बिनेशन ऑफ नेटवर्किंग, इट इज कम्बिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल्स, इट इज ए कम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, इट इज ए कम्बिनेशन ऑफ जो टेक्नोलॉजी होता है, टेक्नोलॉजी इज ए कम्बिनेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स और एटसेट्रा। हम कोई भी सॉफ्टवेयर चलाते हैं, हम वेब एप्लीकेशन ही, वी आर वर्किंग ऑन वेब एप्लीकेशन, तो वेब एप्लीकेशन कम्बिनेशन है कि नहीं? अगर आपके हार्डवेयर नहीं होगा तो वेब एप्लीकेशन सिस्टम पे चलेगा, सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वेब एप्लीकेशन सिस्टम पे चलेगा, आपका वेब ब्राउजर नहीं होगा तो वेब एप्लीकेशन सिस्टम पे चल सकता है। तो टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी इज कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग, नेटवर्किंग, रिसोर्सेज, प्रोटोकॉल्स, etc. Now write down B, application. Application, write down that electronic business and commerce application that electronic business and commerce application that electronic business and commerce application involves interconnected business information system. टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या बोले सर? एप्लीकेशन लिखा रहा हूं मैं, फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए ना इसको। एप्लीकेशन को के लिखिए। यस सर। that electronic business and commerce application, that electronic business and commerce application involves interconnected business information system, involves interconnected business information system. Okay,
तो जो एप्लीकेशन वाट एवर MIS एप्लीकेशन हम डेवलप करते हैं, तो जैसे वी आर वर्किंग ऑन फ्लिपकार्ट, वी आर वर्किंग ऑन एनी अदर ई मीशो, अमेजोन, एजियो। Amazon or any other application, तो क्या that application involves technology, that application involves commerce side, that application involves gateway, क्या उस सबका कम्बिनेशन होगा तब तो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करेगा, है कि नहीं? सी पॉइंट लिखिए, डेवलपमेंट, सी पॉइंट डेवलपमेंट। सर इन सब का फेयर जो है सर, ये फेयर नोटबुक बना के फेयर कर लेंगे। फेयर नोटबुक यस, बनाना है। मैं बना दूंगा और करके दे दूंगा, ये आपको पूरा PDF में बाद में दे दूंगा, ठीक है? डेवलपमेंट लिखिए, दैट डेवलपमेंट वे, that development way to use, that development way to use IT in business, that development way to use IT in business, that development way to use IT in business includes, business includes designing the basic component of information system. That developing way to use IT in business includes designing the basic component of information system. Next, management. Next, management. Management, managing IT emphasize the quality, management managing IT emphasize the quality, comma, a strategic business value, and security of स्टैटिस्टिक्स। a strategic business value and security of an organization in information system. Now, components of a system. Now we will talk about the components of a system. देखिए, there are component, मतलब एक MIS सिस्टम है, उसके क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्या क्या इसको अलग अलग से लिख। कंपोनेंट तो चाहिए ना, जैसे सिस्टम है, जैसे मेरा अपना लैपटॉप है, लैपटॉप का कंपोनेंट है कि नहीं, मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, रैम है, CPU है, दीज आर कंपोनेंट ऑफ लैपटॉप, मॉनिटर है कि नहीं है? तो कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम, राइट डाउन व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए सिस्टम. There are three basic components of a system. There are three basic components of a system. There are three basic components of a system. They are, first लिखिए input, A input, B processing and C output. Input, processing and
आउटपुट। समझ रहे हो आप लोग? इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट, व्हाट डू मीन बाय इनपुट? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस are used to enter that data into the computer system, what you will give answer? Mouse, Mouse and कीबोर्ड, keyboard, pen drive, keyboard, pen drive. Okay, okay. इनपुट का मतलब होता है कि इनपुट मीन्स कि व्हाट आर वी आर इनपुटिंग इंटरनल, इनटू द मशीन्स, व्हाट आर वी आर पुटिंग इंटरनल इनटू द मशीन। तो लिखिए इनपुट में, लिखिए इनपुट इन्वॉल्व्स capturing and assembling. Input involves capturing and assembling elements. असेंबलिंग, असेंबलिंग का मतलब जोड़ना, असेंबलिंग का मतलब जोड़ना। जैसे कंप्यूटर सिस्टम के सारे पार्ट्स अलग अलग हैं, उसको जोड़ के हम सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है। यस सर, Input involves capturing and assembling elements that enter to the system, to be processed, that enter to the system to be processed. Some of the inputs are raw materials. Some of the inputs are raw materials, comma, energy, comma, data, etc. एनर्जी, ऊर्जा। जब हम इनपुट लेते हैं, जैसे फूड के रूप में हम लोग इनपुट लेते हैं, तो क्या है? दैट इज एनर्जी, है ना। इनपुट लेते हैं तब तो हम वर्क कर पाते हैं, करते हैं कि नहीं? सेकेंड पॉइंट लिखिए प्रोसेसिंग। फर्स्ट है इनपुट, सेकेंड है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब कोई सा भी इनपुट गया, जैसे हम खाना खाते हैं, बॉडी में प्रोड्यूस होता है, प्रोसेस होता है, तब ना खाना पचता है। कि जो खाते हैं वो बिना प्रोसेस हुए पच जाता है। उसी तरीके से जब हम इनपुट डालते हैं मशीन के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, हम जैसे कुछ भी इमेज डाले, ग्राफिक्स डाले, आप फॉर्म कोई भरते हैं तो उसमें आधार कार्ड नंबर मांगता है, पैन कार्ड नंबर मांगता है कि नहीं? When you are filling that DRCC form or any online form that demands Aadhaar card or PAN number, tell me. Yes, sir. Yes, sir. तो वो इनपुट मांग रहा है ना? Yes, sir. तो प्रोसेसिंग का क्या मतलब हुआ? कन्वर्ट्स इनपुट टू द आउटपुट। प्रोसेस करने के बाद इनपुट किस चीज में बदल जाता है? आउटपुट में। लिखिए प्रोसेसिंग में इट इन्वॉल्व्स, प्रोसेसिंग में लिखिए इट इन्वॉल्व्स transformation process. It involves transformation process. It involves transformation process that converts input to output. It involves transformation process that converts input to output. Okay. Next, output. Next, write down output. It involves transforming element. It involves transforming element
that has been produced by that has been produced by a transformation process to their ultimate destination. टू देयर अल्टीमेट डेस्टिनेशन, जो उसका एक्चुअल डेस्टिनेशन है, इनपुट को प्रोसेस होने के बाद वहां पे आउटपुट पहुंच जाता है। होता है कि नहीं? होता है इसका सर। मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूं जो आपको आसानी समझ में आएगा। जैसे मैं बनाना शेक बना रहा हूं, वी आर गोइंग टू क्रिएट बनाना शेक, तो इनपुट क्या क्या होगा बताओ तुम लोग? व्हाट आर द इनपुट्स फॉर बनाना शेक? बनाना होगा, मिल्क, बनाना मिल्क सर, बनाना, मिल्क और आइस सर, आइस और चीनी शुगर होगा। शुगर। ठीक है, प्रोसेस होने के बाद जब मशीन में प्रोसेस होगा तो आउटपुट यू विल गेट बनाना शेक। जैसे कैलकुलेटर आप लोग यूज करते हैं, तो कैलकुलेटर में आप लोग फंक्शनलिटी करते हैं 2+3 और 4+3 और 3+4 मल्टीप्लाइड, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। माइनस तो जब प्रोसेस करने के बाद आपका आउटपुट आता है कि नहीं? आता है सर। दैट इज आउटपुट। अब लिखिए डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा एंड इंफॉर्मेशन, डेटा से क्या समझते हैं आप लोग? डेटा ट्रांसफर करना, कोई डेटा मतलब No. What is meaning of data? Yesterday class I have discussed this thing in the classroom. Data is raw fact and figure. Very good, very good. Or types of information stored. storing of data in a row and column process. डेटा क्या है? मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको, प्रीवियस क्लास में अनप्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड डेटा। अनप्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड डेटा। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डेटा। अनप्रोसेस्ड डेटा आर यूजलेस, प्रोसेस्ड डेटा आर यूजफुल। I have discussed this thing in earlier class. Okay. देखिए डेटा एंड इंफॉर्मेशन, प्लीज राइट डाउन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। इसमें लिखिए, पहले राइट डाउन कीजिए रॉ फैक्ट्स एंड रॉ RAW, रॉ फैक्ट्स एंड figures. Raw facts and figures are called data. Raw facts and figures are called data. Raw facts and figures are called data. और सेकेंड पॉइंट लिखिए अनप्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड डेटा। अनप्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड डेटा। थर्ड पॉइंट लिखिए प्रोसेस्ड डेटा सेकंड क्या बोले सर? अनप्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड डेटा। इज कॉल्ड डेटा। जिसकी प्रोसेसिंग नहीं हुई हो उसको डेटा ही बोलते हैं। जिसकी प्रोसेसिंग नहीं हुई है वो क्या है? एक तरीके से डेटा ही है। तो सर रॉ एंड फैक्ट फिगर को ही तब डेटा ही ना कहा जा रहा है सर? यस। तो उसको प्रोसेस, जैसे मैं महात्मा गांधी का फोटो लगा लूं और उसके नीचे नाम नहीं लिखूं तो कोई नया चाइल्ड समझेगा कि वो फोटो किस व्यक्ति का है? नो सर। उसके नीचे नाम लिख दूंगा तो समझ जाएगा। हाँ यस।
बस देखिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड, processed data is called an information. Processed data is called an information. Okay, processed data क्या कहलाता है? Information कहलाता है. Processed data is called an information. Okay, next point लिखिए. Unprocessed data are fairly useless. Unprocessed data are fairly useless. Unprocessed data are fairly useless. But comma देके लिखिएगा, but when these data are processed and interpreted, that is called इंटरप्रेटेड के बाद क्या बोले सर? but when then data are processed and interpreted, comma, that is called useful. अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, डेटा को हम लोग डिराइव्ड कहाँ से करते हैं? फ्रॉम वेयर वी आर कॉलिंग द डेटा, कहाँ से डेटा लाते हैं हम लोग? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डेटा? गूगल के थ्रू सर, सर्चिंग करके. और गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब. ओके, वी कैन से थ्रू द बुक्स से हमें डेटा मिलता है कि नहीं? बुक्स से ही मिलता सर. थ्रू द न्यूज़पेपर, थ्रू द बुक्स, थ्रू द वेब एप्लीकेशन, थ्रू द जर्नल्स, थ्रू द वेबसाइट्स, थ्रू द सर्च इंजन, थ्रू द यूट्यूब लाइक वेब एप्लीकेशन, थ्रू द ऑनलाइन सोशल मीडिया, वी आर गेटिंग डेटा और नॉट? यस सर. तो मैंने बताया, कितने सोर्स मैंने बता दिए लगभग? हाउ मेनी सोर्स आई टोल्ड यू? Now नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डेटा प्रोसेसिंग. व्हाट डू मीन बाय डेटा प्रोसेसिंग? डेटा प्रोसेसिंग से क्या समझते हैं आप लोग? व्हाट डू मीन बाय डेटा प्रोसेसिंग? डेटा प्रोसेसिंग से क्या समझते भाई? डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को गैदर करना, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को कलेक्ट करना. जब तक डेटा को आप कलेक्ट नहीं करोगे, हाउ यू कैन डू प्रोसेसिंग ऑन दैट डेटा? है कि नहीं है?
Without collecting the data, you cannot do any processing operation on a particular data. लिखिए data processing में डेटा एग्जीक्यूट करना सर. yes sir, लिखिए data processing systems performs the data processing system perform the essential role of data processing system perform the essential role of collecting and processing the daily transactions of the organization. Processing the daily transactions of the organization. Data processing is daily transactions of the organizations. Full stop. Data processing is necessary to ensure that the day-to-day activities day-to-day activities of the organization, that the डे टू डे. yes, day-to-day activities of the organizations. सर एक बार रिपीट कीजिएगा सर. Data processing is necessary to ensure that the day-to-day activities of the organization, that the day-to-day activities of the organization are processed, comma, recorded, and acted upon. सर एक्टेड अपॉन का मतलब उस पे परफॉर्म करना. जो डेटा है, डेटा के ऊपर परफॉर्म करना. डेटा रहेगा, डेटा तब तो आप डेटा एनालिसिस कर पाओगे, डेटा कंप्यूटेशन कर पाओगे, डेटा विजुअलाइजेशन कर पाओगे. मल्टीपल ऑपरेशन जो डेटा पे है तब तो कर पाएंगे, है कि नहीं? अच्छा हाँ यस सर. तब ग्राफिक्स एनिमेशन कुछ भी विजुअलाइजेशन व्हाट एवर. स्लाइडिंग. देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इंफॉर्मेशन. बाय इंफॉर्मेशन नेक्स्ट पॉइंट क्या बोले सर? बाय इंफॉर्मेशन वी मीन दैट. ऐसे पता नहीं, सीधा पता चलता है इसे फुल बताएगा. देखिए बातचीत नहीं, बातचीत नहीं भाई. चला एक मिनट 2 तीन करना पे आ जा. चलाने पे by information we mean that by information we mean that the data have been saved
हाँ बोलो। रोहित, बजाज का शोरूम। by information we mean that the data have been shaped into a meaningful form, comma, which may be useful for human beings, कॉमा क्या बोले सर? इनटू मीनिंगफुल फॉर्म। comma, which may be useful for human beings, which may be useful for human beings, full stop. So, अब लास्ट लाइन लिखा रहा हूं, so when data are processed, so when data are processed, comma, interpreted, so data are processed, comma, interpreted, comma, organized, comma, structured or presented, structured or presented, so as to make them meaningful, so as to make them meaningful or useful, comma, they are called information. They are called information. आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? व्हाट डू मीन बाय इंफॉर्मेशन? अब तो आप कहीं कंफ्यूज नहीं करेंगे कि कोई आपसे पूछेगा, एनीबडी आस्क टू यू व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, यू विल मिस और यू विल गिव क्लियर आंसर. Tell me, I am asking to whole class. Okay, I am asking to all of you. If anybody asks you regarding data and information, you can give clear answer or not. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. यस सर। Who is CR of this class? अमन। Please take attendance. I will take from you, Aman. Take a snapshot, okay? Aman is there in class or not? No, sir. No, sir. Can anybody else take? Who will take today? Sir Jitan. Okay, take. Please take. And you share the attendance with the CR that I can collect from him, okay? Okay, sir. Wait, sir. Okay, wait. No problem. Please take. Thank you, sir. Okay, welcome. Thank you, sir. Welcome. थैंक यू सर। Thank you, sir. Okay, okay. Thank you, sir. Okay.
Done, sir. Okay, now I'm ending meeting. Okay.